गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय। गंगा गोदावरी माता की जय। सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय। श्री स्वामी समर्थ गुरु माऊली की जय। भारत माता की जय। श्री स्वामी समर्थ। आज गणपती अथर्व शीर्ष घेणार आहोत आणि गणपती अथर्व शीर्ष ही सेवा घेताना आपल्या गुरूंचं स्मरण करूया। आपण स्वामी समर्थ महाराजांचं स्मरण, कुलदेवीचं स्मरण करूया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री अवल्लभ नृसिंह सरस्वती दत्तवधूत भगवान श्री स्वामी समर्थ महाराज देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। त्वं परम गुरुभ्यो नमः। त्वं परात्पर गुरुभ्यो नमः। त्वं परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। आचार्य सिद्धेश्वर परमादुकाभ्यो नमः। सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। नमस्करोमि। नंतर आपल्या कुलदेवीचं स्मरण करायचं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुण त्रैगुण श्री कुलदेवे नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। नमस्करोमि। आता आपण गणपतीची सेवा सुरू करणार आहोत। आवर्ताना गणपती अथर्व शीर्षाची पण तत्पूर्वी ज्यांना शक्य आहे त्यांनी पद्मासनात बसायचंय आणि मी तुम्हाला जी हाताची मुद्रा दाखवणार आहे त्या हस्तमुद्रेमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना बसायचं आहे। आता ती हस्तमुद्रा ही मूलाधार चक्राची मुद्रा आहे। गणपती अथर्व शीर्षात सांगितल्याप्रमाणे भगवान गणेशांचा वास हा तुमच्या शरीरातल्या मूलाधार चक्रामध्ये आहे। त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यम। आता ते मूलाधार चक्र कुठे आहे तर तुमचा स्पायनल कॉर्ड असतो, त्याच्या डोक्याशी एक बिंदू आहे, या स्थानावर मूलाधार चक्र आहे। तर मी तुम्हाला एक मुद्रा दाखवणार आहे। ही मुद्रा तुम्ही सगळ्यांनी धारण करायची आहे। आपण अथर्व शीर्ष सेवा सुरू करण्यापूर्वी याला मूलाधार चक्राची मुद्रा म्हणतात। ही मुद्रा कशी करायची? हाताचे पंजे एकमेकांना जोडायचे आहेत। त्यानंतर फक्त मधलं बोट आहे ना, हे दोन्ही बोट उभी करायची आहेत, बाकीची बोट सगळी अशी झाकलेली। ही मूलाधार चक्राची मुद्रा आहे। ठीक आहे, एकदम सोपी मुद्रा आहे, मूलाधार चक्राची मुद्रा आहे। आता गणपती अथर्व शीर्षाची सेवा सुरू करण्यापूर्वी मी तुम्हाला जी मुद्रा दाखवली ती धारण करायची आणि हे मूलाधार चक्र आहे। या मूलाधार चक्रामध्ये भगवान गणेशांचं स्मरण तुम्हाला करायचं आहे। लम त्याचा बीज आहे। आपण अथर्व शीर्षाची सेवा सुरू करत आहोत। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वास्तनुर्भिर्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवध्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदन्पतो जायते
सर्वं जगदन्तस्तिष्ठति सर्वं जगदन्तैलयमेष्यति सर्वं जगदन्तै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्नि त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्थेन तुलसितम् कारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारः शान्त्यरूपम् बिन्दुरुद्धरूपम् नादसन्तानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकरुषि निश्चृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तरविभ्राणामशगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैस्तु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसोताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते। आता आपला दुसरा आवर्तन। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदन्ततो जायते सर्वं जगदन्तस्तिष्ठति सर्वं जगदन्तैलयमेष्यति सर्वं जगदन्तै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलोन्नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्थेन तुलसितं कारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारच्छन्त्यरूपम् बिन्दुरुद्धरूपम् नादसन्तानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकरुषि निश्चृत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तरविभ्राणामशगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैस्तु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसोताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय
त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं ततो जायते सर्वं जगदन्तैस्तिष्ठति सर्वं जगदन्तैलयमेष्यति सर्वं जगदिदन्तै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलोन्नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्तु तुलसितं तारेण रुद्धम् एतद् मनस्वरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुद्धरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निच्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तर्बिभ्राणामुषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैस्तु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यातो प्रपदे पुरुषात्परम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगे योगिनामरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसोताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवदातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं ततो जायते सर्वं जगदन्तस्तिष्ठति सर्वं जगदन्तैलयमेष्यति सर्वं जगदन्तै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलोन्नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्नि त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्तु तुलसितं तारेण रुद्धम् एतद् मनस्वरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुद्धरूपम् नारसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निच्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तर्बिभ्राणामुषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैस्तु पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यातो प्रपदे पुरुषात्परम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनामरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसोताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात्
अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दात् विद्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं ततो जायते सर्वं जगदं तस्तिष्ठति सर्वं जगदं लयमेष्यति सर्वं जगदं प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्परमिता पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्थेन्दु तुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार छन्द्यरूपम् बिन्दुरुद्धरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकरुषि निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं तदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणामुषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शिल्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टातो प्रपदे पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवदातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दात् विद्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं ततो जायते सर्वं जगदं प्रत्येति सर्वं जगदं प्रतिष्ठितति सर्वं जगदं लयमेष्यति सर्वं जगदं प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्नि त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दु तुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार छन्द्यरूपम् बिन्दुरुद्धरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकरुषि निश्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणामुषगध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टातो प्रपदे पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं कृतं वच्मि
सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदन्पतो जायते सर्वं जगदन्पस्तिष्ठति सर्वं जगदन्तैलयमिष्यति सर्वं जगदन्तै प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पतिपदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्थेन तुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपं। यकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकरुषि निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तरविभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदन्ततो जायते सर्वं जगदन्तस्तिष्ठति सर्वं जगदन्तैलयमेष्यति सर्वं जगदन्तै प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्थेन तुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम्। यकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तरूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकरुषि निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तरविभ्राणामूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टादौ प्रकृते पुरुष एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः।
ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदन्पतो जायते सर्वं जगदन्पतिष्ठति सर्वं जगदन्पै लयमिष्यति सर्वं जगदन्पै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दु तुलसिदं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रतं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमजितम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रपदे पुरुषात् परम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनावरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदन्पतो जायते सर्वं जगदन्पतिष्ठति सर्वं जगदन्पै लयमेष्यति सर्वं जगदन्पै प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दु तुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनस्वरूपम् गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रतं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणमुषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारमजितम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रपदे पुरुषात् परम्
एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसूताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। श्री वरदमूर्तये नमो नमः। श्री वरदमूर्तये नमो नमः। अतः फलश्रुति एतत्तद्वर्षीर्षयोदिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं ध्यानो दिवस्मृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयोज्यानो अपापो भवति सर्वत्र ध्यानोपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षम् अशिष्याय न देयम् यो यदि मोहाद्यासति स पाप्यान् भवति सहस्रवर्तनात् यं यं कामादीयते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपति अविंशिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यामनजवति स विद्यावान् भवति इत्यर्थं वाक्यं ब्रह्माद्यावरण विद्यान् विभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुर्यजति स वैश्रणापमो भवति यो लाजयजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमवाप्नोति यस्ताचत् समिद्भिर्यजति स सर्वलवते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सनित्वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्योपनिषद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वास्तनुर्भिर्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आता भगवान गणपतींना सर्व विघ्न निवारणाची विनंती करायची आणि आपण आता संकटनाशन गणपती स्तोत्र पठण करणार आहोत। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्त्र चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञया पठेन्नर न च विघ्नभयस्तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्र षड्भिर्मासे बलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते न संशय। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तत्स विद्या भवेत् सर्वा श्री गणेशस्य प्रसादतः। श्री नारद पुराणे संकटनाशनं गणपती स्तोत्रं संपूर्णम्। आता जे सेवेकरी गणपती समोर बसलेले आहेत आणि ज्यांच्याकडे दुर्वा अवेलेबल आहेत त्यांनी एक एक दुर्वा गणपतीला व्हायचे आणि वाहताना नमः म्हणायचे। ज्यांच्याकडे काहीच नाहीये त्यांनी गणपतीचं स्मरण करायचे आणि फक्त नमः म्हणायचे। ओम विनायकाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम गौरीपुत्राय नमः। ओम गणेश्वराय नमः। ओम स्कंदाग्रजाय नमः। ओम अव्ययाय नमः। ओम भूताय नमः। ओम दक्षाध्यक्षाय नमः। ओम द्विजप्रियाय नमः। ओम अग्निगर्भच्छिदे नमः। ओम इंद्रश्रीप्रदाय नमः। ओम वाणीबलप्रदाय नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम सर्वर्धनाय नमः। ओम गौरीतनुजाय नमः। ओम शर्वरीप्रियाय नमः। ओम सर्वात्मकाय नमः। ओम सृष्टिकर्त्रे नमः।
ओम देवानिकार्जिताय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शुद्धाय नमः। ओम बुद्धिप्रियाय नमः। ओम शांताय नमः। ओम ब्रह्मचारिणे नमः। ओम गजाननाय नमः। ओम द्वैमातुराय नमः। ओम मुनिस्तुत्याय नमः। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः। ओम एकदंताय नमः। ओम चतुर्बाहवे नमः। ओम शक्ति संयुताय नमः। ओम चतुराय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हेरंबाय नमः। ओम ब्रह्मवितमाय नमः। ओम कालाय नमः। ओम ग्रहपतये नमः। ओम कामिने नमः। ओम सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। ओम पाशांकुशधराय नमः। ओम छंदाय नमः। ओम गुणातीताय नमः। ओम निरंजनाय नमः। ओम अकल्माशाय नमः। ओम स्वयं सिद्धार्चित पदाय नमः। ओम बीजापुरकराय नमः। ओम अव्यक्ताय नमः। ओम गदिने नमः। ओम वरदाय नमः। ओम शाश्वताय नमः। ओम कृतिने नमः। ओम विद्वत्प्रियाय नमः। ओम विद्वयाय नमः। ओम चक्रणे नमः। ओम इक्षुचत्कृते नमः। ओम अपोच्चत्फलकराय नमः। ओम श्रीधाय नमः। ओम श्रीहेतवे नमः। ओम श्रुतिहर्षदाय नमः। ओम कलाधृते नमः। ओम जटिने नमः। ओम चंद्रचूडाय नमः। ओम अमरेश्वराय नमः। ओम नागयज्ञोपविदिने नमः। ओम श्रीकांताय नमः। ओम रामार्जितपदाय नमः। ओम वृत्तिने नमः। ओम स्थूलकांताय नमः। ओम प्रैकर्त्रे नमः। ओम संघोषप्रियाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम स्थूलतुंडाय नमः। ओम अग्रजन्याय नमः। ओम ग्रामण्ये नमः। ओम गणपाय नमः। ओम स्थिराय नमः। ओम वृद्धिदाय नमः। ओम सुभगाय नमः। ओम शूराय नमः। ओम वागीशाय नमः। ओम सिद्धिदाय नमः। ओम दुर्वाबिल्वप्रियाय नमः। ओम कंताय नमः। ओम पापहारिणे नमः। ओम कृतगमाय नमः। ओम समाहिताय नमः। ओम वक्रतुंडाय नमः। ओम श्रीप्रदाय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम भक्ताकांचिताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम केवलाय नमः। ओम सिद्धाय नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम ज्ञानिने नमः। ओम मया युक्ताय नमः। ओम दंताय नमः। ओम ब्रह्मिष्ठाय नमः। ओम मया वर्जिताय नमः। ओम प्रमर्तदैत्यभयदाय नमः। ओम व्यक्तमूर्तये नमः। ओम अमूर्तये नमः। ओम पार्वती शंकरोत्सक कैलवत्सलनाय नमः। ओम समस्त जगदाधाराय नमः। ओम वरमुषकवाहनाय नमः। ओम हस्तसूताय नमः। ओम प्रसन्नात्मने नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः। आता ज्यांच्याकडे पळी भांड तामण असेल तर त्यांनी पळीमध्ये पाणी घेतलं आहे आणि भगवान शिवांना प्रार्थना करायची, भगवान गणेशांना प्रार्थना करायची की तुमच्या हातात जे आयुध आहेत त्याने आमचं रक्षण करा. आणि ज्यांच्याकडे पळी भांड तामण नाहीये त्यांनी फक्त प्रार्थना करायची आहे.
ओम गौरीपुत्रं नमस्तेस्तु सर्वसिद्धि विनायकं सर्वसंकटनाशाय गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते गौरीपुत्राय नमः। प्रथम अर्घ्यं समर्पयामि। ब्राह्मणात पाणी सोडून दे, पुन्हा एकदा पळीत पाणी धरून ठेवायचं। ओम विनायकं नमस्तुभ्यं सर्वकाम्य फलप्रदं वांछितं मे दत्तं गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते नमः। द्वितीय अर्घ्यं समर्पयामि। पुन्हा पाणी सोडून द्यायचं, पुन्हा पळीत पाणी भरून घ्यायचं। ओम बालचंद्रं नमस्तुभ्यं भक्तानां भद्रदायकं गंधपुष्पं फलैर्युक्तं गृहाणार्घ्यं नमस्तुते बालचंद्राय नमः। तृतीयं अर्घ्यं समर्पयामि। आता ते पाणी सोडून पुन्हा नवीन पाणी पळीमध्ये भरून ठेवायचं। तीर्थना उत्तमं देवी गणेशं प्रिय वल्लभे सर्वसंकटनाशार्थं चतुर्थार्घ्यं नमो नमः लंबोदराय नमः। चतुर्थार्घ्यं समर्पयामि। आता आज चंद्राची पूजा असते, त्या चंद्राच्यासाठी अर्घ्य देणार आहोत। ओम नमः सोमाय देवाय द्विजराजाय पालिने पाहि मा कृपया देवं नक्षत्रेस्तु नमोस्तुते सोमाय नमः। प्रथम अर्घ्यं समर्पयामि। पाणी तांबडं सोडून दे, पुन्हा एकदा पळीत पाणी घ्यायचं। निशाकराय नमः। द्वितीयं अर्घ्यं समर्पयामि। आता पुन्हा एकदा पळीत पाणी। संसार रुद्रो सत्संकष्ट भूतं सुमुखं प्रसिद्धं सत्वहि मे नाशाय कष्ट संघं नमो नमः कष्ट विनाशकाय नमः। तृतीयं अर्घ्यं समर्पयामि नमस्करोमि। आजची आपली गणपतीची सेवा संपन्न झालेली आहे। झालेली सेवा ही गणपती बाप्पा आपले जे गुरु प्रणाली आहे ब्रह्मा विष्णू महेश्वर श्रीपाद श्री वल्लभ कृष्ण सरस्वती, त्यानंतर अवतार चौथा श्री स्वामी समर्थ परब्रह्मा, त्यानंतर ब्रह्मीभूत परमपूज्य पिठे महाराज, ब्रह्मीभूत परमपूज्य मोरे दादा आणि प्रातस्मरणीय गुरु माऊली, माता पिता आणि आद्य गुरु शंकराचार्य वेद व्यास या सगळ्या गुरु प्रणालीच्या चरणी अर्पण। श्री स्वामी समर्थ। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज।